Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start a new chapter that is Kingdom Prokaryote. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 6. That is Kingdom Prokaryote. इससे ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स जो 5 चैप्टर्स हैं हमारे वो टोटल किंगडम बेस्ड है, ठीक है। जो 5 किंगडम्स हैं उनको चैप्टर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। सो द फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम Prokaryote, which is also called as Kingdom Monera. Clear? So our new chapter, new topics, new ambitions. So first of all, what are prokaryotes? The organisms which are made up of or are composed of prokaryotic cells. Are called prokaryotes. Clear? So in Greek, the word pro means before, pro means before, and karyon means, जी डियर स्टूडेंट्स, कैरियन का क्या मतलब है चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। Carrion means nucleus. So these are the organisms which have no nucleus. Before nucleus मतलब ऐसे organisms जो nucleus containing organisms से पहले मौजूद थे, the prokaryotes. So dear students, the microbiologists place or divide the prokaryotes into 2 divisions. और डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको पता है, इसमें बताने की मुझे मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ज़रूरत है,
लेकिन फिर भी जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स? द बैक्टीरिया, दे आर द बैक्टीरिया, दिस इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया जो हैं वो इसमें शामिल है, बैक्टीरिया। ओके, तो दो डिविजन्स हैं इनकी अकॉर्डिंग टू द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? द बायोलॉजिस्ट विच स्टडीज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, रादर यू नीड टू seek the help of microscope in order to see them. Clear? तो ऐसे organisms जो जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो बायोलॉजिस्ट इनको स्टडी करता है उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और इसमें हम वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई उनको स्टडी करते हैं, क्लियर, इन माइक्रोबायोलॉजी। सो दीज टू डिविजन्स इंक्लूड number 1 are the eubacteria, and number 2 are the archaeobacteria. Here, ये दो मेजर डिविजन्स हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट। यूबैक्टीरिया, दे आर एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया, द ट्रू बैक्टीरिया, here, and the main difference between them is that eubacteria, the cell wall is made up of पेप्टाइडोग्लाइकन। आपको याद है ना चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसके हवाले से, इनके सेल वॉल के हवाले से। सो पेप्टाइडोग्लाइकन जो पॉलीसेकेराइड और जो एमाइनो एसिड्स से मिलकर इनके आपस में केमिकल बॉन्डिंग के जरिए इनकी ये वॉल बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको म्यूरिन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन, क्लियर। और जबकि आर्कियोबैक्टीरिया, एक्चुअली ग्रीक में इसको कहा जाता है द एंशिएंट बैक्टीरिया, द एंशिएंट बैक्टीरिया, क्लियर। और इनमें जो मेजर डिफरेंस वो सेल वॉल का डिफरेंस है कि ट्रू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, while the archaeobacteria their cell wall lacks पेप्टाइडोग्लाइकन, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। They have some other polysaccharides, सिर्फ polysaccharides होती हैं कुछ और किस्म की जो कि इनके सेल वॉल में मौजूद होती हैं। The polysaccharides are present in their cell wall। और डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक और भी डिफरेंस जो है वो मौजूद है। यू बैक्टीरिया ये हमें हर तरह के जो एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया दे आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और एनवायरमेंट, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह इस तरह के, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर रहने वाले, जबकि ये आपको
मुख्तलिफ तरह के बाकी जो एनवायरनमेंट, हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, द यू बैक्टीरिया. So that was the generalized classification of these prokaryotes according to the microbiologist. Now let us talk about the discovery or the historical perspective of bacteria. Discovery of bacteria or the historical perspective of germ theory, a theory of diseases. Yeah? इस तरह से पूछा जा सकता है दोनों तरीक़ों से, डिस्कवरी के अतबार से भी और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि किसने फार्मूलेट की, कैसे बाकी जो साइंटिस्ट हैं उनका इसमें रोल शामिल है. तो डियर स्टूडेंट्स, इंसानों की शुरू में ये यानी कि जुस्तजू रही कि वो किस तरीके इन चीज़ों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकें, लेकिन चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते ही उन्हें को हैं जो कि एक नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो इनकी डिस्कवरी है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. और आपको पता है कि जो सबसे पहली माइक्रोस्कोप जो है वो जो इजाद हुई थी, जो इन्वेंट की गई थी, दैट वाज इन 1595. ठीक है, एक हॉलैंड का वो एक साइंटिस्ट था ज़ेकेरियस जेनिसन, उसने अपने ही एक सेल्फ जो मेड है वो ट्यूब माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी. आपने पढ़ा था इसको प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर. अच्छा डिस्टूडेंट्स, इसको मैं मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ये चैप्टर जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो द एंट्री टेस्ट. सो एमडी कैट के अंदर ये टॉपिक शामिल है, यानी कि किंगडम प्रोकैरियोट्स. इसमें जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यूज आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको साथ में मार्क करवाता जाऊंगा कि ये जो से पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने हैं, एंटी टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो अब तक ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सट्रीम कंडीशन में कौन रहते हैं, आर्के बैक्टीरिया, और सेल वॉल का जो डिफरेंस आपको बता दिया. ठीक है, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से इनकी दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज एंशिएंट बैक्टीरिया. ठीक है, सो प्रो मीन्स, कैरियंस मीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो these are the MCQs up till now. So the discovery of bacteria and other microorganisms is related to the invention of microscope. तो उसकी रीज़न आपको बता दी, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बगैर माइक्रोस्कोप पे नज़र नहीं आ सकते. सो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पहल की इसके डिस्कवरी में बैक्टीरिया की is known as in 1673, याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटोनी वन Leeuwenhoek. Basically, he was a Dutch scientist. Was a Dutch scientist. Dutch समझते हैं, जो जर्मन से रिलेटेड हो, जर्मनी से रिलेटेड हो. So he was a German basically. So in 1673, Antony van Leeuwenhoek उसने डिस्कवर किया था. He discovered
bacteria by his self-made microscope along with some protozoans clear? तो कुछ प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया इसको उसने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. he drew the accurate depictions of bacteria and the protozoans by using microscope. यानी माइक्रोस्कोप में उनको देखता था, उसको उनको ऑब्जर्व करता था इस तरह से, और फिर उनकी डिपिक्शंस, उनकी ड्राइंग्स बनाता था और बहुत ही एक्यूरेट ड्राइंग्स बनाता था. He first discovered bacteria. अब ये एमसीक्यू याद रखना है. फर्स्ट, सबसे पहले, इन रेन वाटर. सबसे पहले उसने किसमें इसको ऑब्जर्व किया? इन रेन वाटर. क्लियर? देन he confirmed in saliva, in vinegar, clear, and other things. So ये याद रखना है. He named means the antony when he named these moving objects or moving organisms, उसको एक नाम दिया बाकायदा तौर पर, as animalcules. As animalcules. तो यहाँ से फिर ये कहानी असल में स्टार्ट होती है 1673 में, यानी कि 17वीं, द 17th सेंचुरी. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आता है बाय द नेम ऑफ लुईस पैस्चर. उसका नाम तो डेफिनेटली आपने पहले भी सुन रखा होगा. नाउ देयर इज लुईस पैस्चर्स वर्क. So Louis Pasteur, basically, he discovered and confirmed that the microorganisms cause diseases. स्टूडेंट्स, आपको याद है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी फॉर्मुलेशन में उसमें रोडोल्फ विर्को, वो भी एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक स्टेटमेंट पास की थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, दैट ऑल सेल्स अराइज और द न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. कि नए सेल कहाँ से बनते हैं? पुराने सेल्स के अंदर जब डिवीजन होती है. और उसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? आपको याद है वहाँ पर, या खोल के देखिएगा चैप्टर, दैट इज लुईस पैस्चर. उसने इसको प्रूफ किया था. और प्रूफ कैसे किया था? एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया. तो जब उसने देखा कि एक बैक्टीरिया इट इज़ डिवाइडेड टू 2 and 3 एंड इस तरह से ऑन एंड ऑन इनके अंदर डिवीजन हो रही है, तो यहाँ से उसे जो उसने हाइपोथेसिस दिया था रुडोल्फ विर्को ने कि नए सेल किससे बनते हैं? पुराने सेल्स के डिवीजन से. तो यहाँ पर उसका वो वाला जो सी एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया था लुईस पैस्चर ने. इसके अलावा
इसने लुईस पास्चर he made many contributions in microbiology and medicine. आप इंग्लिश में सेकेंड ईयर की इंग्लिश में बाकायदा इसके ऊपर एक चैप्टर भी पढ़ेंगे लुईस पास्चर के हवाले से। इसकी जितने भी वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं रिलेटेड टू एंड he developed vaccine against, इसने वैक्सीन्स बनाई थी किसके खिलाफ? Against anthrax and fowl cholera and rabies, ठीक है, इनके खिलाफ वैक्सीनेशन बनाई। एंथ्रैक्स बेसिकली ये कैटल्स की डिजीज़ है जो कि इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकती है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम विच इज़ कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे चल के इसको हम डिस्कस भी करेंगे। और फाउल कॉलेरा ये जिनसे चिकन और इसी से रिलेटेड जो अंडे देने वाले गोश्त वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये एक डिज़ीज़ है। और इसी तरह से रेबीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोफोबिया जिसमें होता है ये रैबिट डॉग पागल कुत्तों के कारण से ये उनसे बीमारी हो जाती है। तो इनके खिलाफ जो वैक्सीन इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी, डेवलप की थी, ही वॉज द लुईस पास्चर। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज पास्चुराइजेशन। ही ऑल्सो इन्वेंटेड पास्चुराइजेशन। याद है आपको पास्चुराइजेशन टेक्निक? उसमें क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? It is a technique used to conserve or preserve the milk and milk products. ठीक है, और इसमें the technique to preserve milk and milk products by heating at 72 degrees Celsius for 15 seconds or 63 degrees Celsius for 30 minutes. तो फिर इसमें मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। फिर इसको एयर में एक्सपोज नहीं किया जाता, फौरी तौर पर इसको चिलर में डालकर फौरी तौर पर फिर इसको पैक कर लिया जाता है टेट्रा पैकिंग में। तो इस तरह से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेफ हो जाती हैं। क्लियर? और फिर इस तरह से आगे फिर एक और नाम आएगा रिलेटेड टू, तो यहाँ से तो कंफर्मेशन हो गई बैक्टीरिया की, ठीक है, जिसको एंटोनी वैन ने पहले इसको एनिमल्क्यूल्स कहा, फिर उसके बाद लुईस पास्चर उसने इसको सेलुलर और पेस्चुराइजेशन, और फिर डिजीज़ में जो है इसके हवाले से जो इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से इसकी डिस्कवरी की। और फिर उसके बाद देयर इज़ अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट कॉश। सो ही वाज द साइंटिस्ट बेसिकली। He formulated the germ theory of disease. Germ theory of diseases. So ये MCQs के लिए आपने मार्क कर लेना है कि germ theory of disease के वाले से। So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे
द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।